Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today in this video we will do language planning. Language planning and its type, which is a very important topic for MEG 04 aspects of language subject for MA English IGNOU students. Let us proceed to the video now and try to know what this concept is all about, and please do not forget to share and subscribe the channel. Let us talk something very formal. Language needs to be planned in order to bring uniformity. Robert L. Cooper 1989 defines language planning as the activity of preparing a normative orthography, grammar, and dictionary for the guidance of writers and speakers in a non-homogeneous speech community. This is the very formal definition given by famous linguist Robert L. Cooper in 1989. Let us understand this definition. Orthography. Orthography is the study of spellings. Grammar, the rules of tenses in a particular language, and dictionary is something which gives us the idea of elaborated vocabulary. जब इन तीन चीजों को ध्यान में रख के एक लैंग्वेज को प्लान किया जाता है जनरली for the whole nation, basically, specifically for the speakers where the language is non-homogeneous. ऐसा नहीं है कि वही पर्टिकुलर लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज पूरे नेशन में बोली जाती है. पूरे नेशन में नॉन होमोजीनियस लैंग्वेज बोली जाती है. अलग अलग कम्युनिटी या तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं या फिर एक ही लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से बोलती हैं. देन वी विल कॉल इट नॉन होमोजीनियस. और उस नॉन होमोजीनियस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए लैंग्वेज की प्लानिंग की जाती है. So language planning is basically an attempt or try to influence how a language is used. Language को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. This is usually done to make it possible to use the language for more subjects, more people. Goals, objectives, strategies are made to change the way a language is used. एक लैंग्वेज को किस तरीके से ऑफिशियली इस्तेमाल करना है बेसिकली, एंड दैट इज अ टॉप टू बॉटम process. Governments and agencies are the one who decide. I and you sitting here cannot decide that from now onwards this variety or that variety will be spoken by masses. It is a top to bottom process. There are basically three types of plannings: corpus planning, status planning, and acquisition planning. We will do all three with the help of some examples and the great amount of description. Let us talk about corpus planning first. कॉर्पस प्लानिंग का काम है नए नए वर्ड्स और एक्सप्रेशन और लैंग्वेज के चेंजेस को देखना. बेसिकली न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशन चेंजिंग इन द ओल्ड वंस टू हैव न्यू मीनिंग. कॉर्पस प्लानिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व विद क्रिएटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अ लैंग्वेज इन दीज एरियाज: स्पेलिंग, ग्रामर एंड डिक्शनरी. जो हम अभी बात कर रहे थे ना, ऑर्थोग्राफी, ग्रामर और डिक्शनरी, उनको डिसाइड करना, उनको मैनेज करना और लिंग्विस्टिक प्योरिटी को भी डिसाइड करना. Linguistic purity is actually about avoiding any kind of alien or foreign influence to a language, because foreign influence on a language is seen bad actually. This linguistic purity actually also belongs to corpus planning. Let us see status planning deals with what. Status planning wants to change the way a language is used. It is about making some languages or dialects official language for a territory. हमने corpus planning में क्या किया? Corpus planning looks at the areas of grammar, spelling and vocabulary. और status planning ये देखती है कि कौन सी language, कौन सा dialect official dialect बनने के लायक है. It is about making some languages or language official language for a territory. Very often, part of status planning is creating a writing system for a language that was only spoken before. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेटस प्लानिंग कुछ ऐसा भी करती है कि कोई लैंग्वेज पहले सिर्फ
बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी, उस लैंग्वेज के लिए रिटन अरेंजमेंट्स भी क्रिएट किए जाते हैं कि राइटिंग में, एकेडमिक्स में, फॉर्म्स में, ब्यूरोक्रेसी में उस लैंग्वेज को एज अ रिटन लैंग्वेज भी यूज किया जाए. दैट विल फॉल अंडर स्टेटस प्लानिंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लानिंग, दिस इज एक्विजिशन प्लानिंग. एक्विजिशन का मतलब ग्रैब करना या करवाना. इट इज अबाउट टीचिंग द लैंग्वेज. लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाना through the method of teaching. It looks at ways to make it easier or more attractive to learn a language. Suppose India में we know कि at present English and generally Hindi or regional languages are quite popular. For example, ऐसा कभी होगा नहीं, बहुत ही रेयर है, मे बी कैन हैपन इन फ्यूचर कि सम अदर लैंग्वेज इज टू ब्रॉट टू इंडिया. इंडिया में कोई एक लैंग्वेज है, एबीसी लैंग्वेज, जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है स्लोली एंड स्टेडीली, एंड दी गवर्नमेंट प्लान्स की अब उस लैंग्वेज को लाया जाए, राइट. तो उस लैंग्वेज की डिक्शनरी स्पेलिंग के साथ जब हम डील करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कॉर्पस प्लानिंग. उस लैंग्वेज के जब हम स्टेटस के साथ डील करेंगे, उस लैंग्वेज को हमने चूज कर लिया कि इसी लैंग्वेज में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, दैट विल बी कॉल्ड status planning. And acquisition planning is when the plans are made to teach that language to masses, to make that language reach to the masses. So very often I told you, acquisition planning involves making the language more attractive to learner for speaker of other language. किसी और language के speakers को एक particular language में with the methods of teaching proficient बनवाने की कोशिश करना falls under acquisition planning. Let us summarize these points now. Status, corpus, and acquisition. Status: the relative prestige of a language has due to its place in society, that is, which language to be used and where. देखा जाना कि कौन सी लैंग्वेज आखिर यूज करनी है, कहाँ पर करनी है, एकेडमिक्स में कौन सी लैंग्वेज सूट करेगी, ब्यूरोक्रेसी में कौन सी लैंग्वेज सूट करेगी, पॉलिटिक्स में कौन सी लैंग्वेज सूट करेगी. सो एज पर द पर्पस टू डिसाइड विच लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड स्टेटस. कॉर्पस: the body of these languages, which alphabet to use, what kind of vocabulary, correct usage, correct pronunciation, modern terminologies को किस तरीके से handle करना है, that falls under corpus planning. And acquisition: how to get the population to learn or acquire these languages. लैंग्वेज का स्टेटस डिसाइड हो गया, लैंग्वेज की कॉर्पस प्लानिंग डिसाइड हो गई, लेकिन लैंग्वेज की एक्विजिशन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट. These parts तो are on paper तो बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है, लेकिन जनरल पब्लिक की प्रैक्टिकल लाइफ तक पहुंचाना, that is done by this step, acquisition. Let us summarize it simply. When the government of a community or nation chooses a variety of language as national or official, both of these words you will use in exam, as national or official language, it becomes imperative to engage in what is known as language planning. जब एक गवर्नमेंट या एक कंट्री की हाई प्रोफाइल कोई एजेंसी डिसाइड करती है कि एक लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस दिया जाना है या फिर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, तो जो भी स्टेप्स, जो भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं, उन प्रोसीजर्स को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग इज टेकिंग प्लेस. So in short, what is language planning? Language planning is a thoughtful work. एक सोचा समझा काम है, spontaneously नहीं होता है, thoughtful, deliberate work है to impact the function, structure or acquisition of a language or languages. लैंग्वेज भी हो सकती है, लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, वैरायटी भी हो सकती है उनकी, विद इन अ स्पीच कम्युनिटी. एक स्पीच कम्युनिटी में एक थॉटफुल वर्क है एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लेवल तक इम्पैक्ट करने का. So that is it for this part of the video. In these videos, we are covering the things in short. If you join the classes, you will get to
have the live discussion during our live sessions, and PDFs will also be given. Regular tests will be conducted, so that way you will be benefited a lot and will be prepared fully for your examination. You may join the classes to cover the topics in detail. Can click the link given in description to reach to us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel. A great best of luck to all of you for any of the upcoming exam, be it the academic exam or be it any exam that life conducts for you. Great best of luck.